Okay, please confirm me. Are you able to see my screen? Yes, now it is visible. Yes, it's visible. Okay. So Yes, yeah. hi friends. My name is Hussain Patan. I am holding 13 years of industrial experience, and I will be your trainer for practical application of Excel, Power Query, and Power Pivot. So this will be the agenda for the day. It's introduction, understanding Power Query and Power Pivot, post information, and payment mode. So I would request you to quickly introduce yourself so that we may know each other. Okay. I am Jignesh. Right now I'm working with Invoice Vodafone, and for upgrading myself, I will like to learn on this. Okay. So next participant. Hi, this is Gajanan Thadve, working in finance area from last 14 years and looking to explore my Excel skill. So in past few years back, I have completed one of course like Advanced Excel and micro things from your same institute. So looking forward to see learn some interesting and some more important. Okay, fine, great. Next participant, please. Hi, Pawan here. I'm audible? Yes, Pawan. Yes. So my name is Pawan Barampe. I have total 10 years of experience. I'm working in data analytics and I have done uh, all VBA classes and Access class and Excel class from AFCKS. So I am the old student, like from 6 years. Okay, fine. Next participant. Myself, Krishna. I'm just completed my BCom and I have to be an data analyst in any of company sector. I not able to understand total practical application of these kind of Power BI query. That's all thing. That's why I'm joined here. Okay, you are the fresher, right? You are not working. Yeah, sir. I'm a fresher. I'm not working. Okay, fine. Last participant. Hey, hi, my name is Farhan. So this is my third trainer, I think. So I started with Yusuf, then I had Raza as my trainer, then Shabbir as the trainer, and now Hussein is the fourth trainer from AFC KSSB training. So I'm a old school guy. Okay, so mostly all of you are the ex-students. Yeah, we are expecting a big discount now. Yes, correct. So regarding discounts, you have to have a word with Raza Sagar. Yeah, go Okay, ahead. Go ahead. Thanks for inviting us, Hussein. Please continue. okay, fine. So quickly, I will take you through the our website. Okay, as you are the ex-students, so you might be aware of all the things, basic things. So I will just quickly I will not take a much of the time to introduce the institute. And before conducting this session, I just need to confirm with you whether all of you are comfortable in English and Hindi, both the language. Hindi is also Yes. fine. Okay, fine. So we have started our journey in 2010 by our co-founder, Mr. Raza Sagar, and from past 13 years we are into this industry offering n number of courses, and as many of you are the ex students, so all of you are aware that what are the courses that we are offering. Still we have one fresher, so I would like to inform him that after logging into afckstechnologies.in, under the course pages you can see the n number of courses that we are offering. Okay, right from the basic to the specialization courses. These are the specialization courses that we are offering. And we have
few Telegram groups on we have Telegram groups for problem solving like advanced Excel, VBA macro queries, Power BI, and Power Tools. So I would strongly recommend you, if you haven't joined this group, please join this group and help the students in resolving their day-to-day challenges, so that it would help you in understanding the query, finding out the solution, and enhancing your skill set. Along with this, we also have a job opening group on Telegram, so you may join this group as well. As there are many jobs been posted into this group by our ex students, as well as there are few external participant into this channel, so they keep on posting the job opportunities. So you may refer to the job opportunities, and if you think that the particular job opportunity is suitable for you, then you may apply for it. Okay, so let's move ahead. So our next topic is understanding Power Query and Power Pivot. So before I explain you what is Power Query and Power Pivot, so I just need to understand from you guys, how many of you have used Power Query in your day-to-day life? Yes, I have been using from last 2 years. You have been using for last 2 years. Okay, so Yes. how is your experience? So my experience is that I will say it is faster than macros and easier to use, but there are some technicalities or functions which I am not aware. So still I want to learn it, and I have seen a demo session of the previous batch. Like we can write the code more efficiently, M code. So that is why I have joined the class. Okay, so may I know, you are using the tools option, right, into the Power Query? Yes, yes, yes. Into Power Query, Excel as well as into Power BI desktop. Okay, fine, great. So anybody else is using Power Query in your day-to-day life? No. Okay, so let's move on to the topic, that understanding the Power Query and Power Pivot. Okay, so first we will understand what is the Power Query. Okay, so Power Query is basically, it's an inbuilt Excel function, Excel tool, I can say. As how many of you have done VBA or aware about the Excel macros? I know about Yes, VBA. yes. Yeah. I have also done three classes, all three top classes. Okay, so as you know that Excel macros is the part of an Excel. Okay, similarly Power Query is also the part of an Excel. uh, since 2010 there is a lots of enhancement been done by the Microsoft in developing the Power Query, and nowadays Power Query is like a bread and butter for you. If you are well aware about the advanced Excel, and you are working into a data analytical skills, then Power Query is the tool which you must be knowing, because you don't want to limit yourself towards only the Excel macros or towards the advanced Excel, because learning Power Query will also give you an exposure to enhancing your skills towards the Power BI as well. Okay, and as well as it will also enhance your skills towards the pivot, because pivot is one of the mostly used function into the organization, like it's been your pivot tables, your pivot charts, many more things you can do with the pivot, right? So Power Query is basically the data transformation and preparation tool. It is been connected through the various data sources. Okay, connects to the various data sources in this sense means, like I will just open an Excel file and I will just show you how we justify this statement that connects to various data sources. So this is the Excel file. Okay, in Excel ribbons under data tab, you have an option that is get and transform data. So you can see over here, get data. You can connect the data through notepad, CSV files, okay, web, from website, okay, from table ranges,
you can connect the sources over here. Okay, and you can do the data cleaning task over here, prepare the data, okay, and do lot of stuffs with the help of the data. So over here you can see you can import the data, clean it and reshape the data as per your requirement, and automate automation of the data extraction and transformation. I would be showing you one small demo that I have prepared for you for this class. Okay, and the second important thing over here is it's one of the most user friendly data transformation interface. Okay, as most of us are using excels from many years, we are used to the excel, and once you are used to the excel, you are being hero into your organization. Am I right? And do you agree with your statement, do you agree with my statement that once you are expert into excel, you are being like an hero into your organization? Yes, Hussein, I'm experiencing the same in my organization. Right, many people come to you, they approaches you, you feel better, right? You feel confident, you think that yeah, I'm getting valued in my organization. Why you are getting valued in your organization? The reason is you are very much aware, आपको पता है कि एक्सेल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेल के साथ साथ आपने वीबीए मैक्रोज भी किए हुए हैं। ओके, तो इसके वजह से आपका जो वेटेज है कंपनी में वो और बढ़ गया होगा, राइट? राइट Yes, गाइस? yes. ओके, सो उसी तरीके से आप जब पावर क्वेरी भी सीखोगे तो आपके जो रिज्यूमे में स्किल सेट्स होंगे, पावर क्वेरी में भी वो एक और स्किल सेट आपका एड ऑन हो जाएगा, एंड आप अपने आप को मैक्रोस की तक ही लिमिटेड नहीं रखोगे. You can tell to the people that along with the Excel macros, let me check who has joined. Okay, it's Ravi. So you can tell people, you can mention it into your resume that along with the Excel macros, you are also aware about the Power Query and you add M language skill. The language used into the Power Query is known as the M language. It, you are aware about this language, and this is also after VBA macros. This is also one of the easiest coding language that you can learn on. Okay. The next part is the Power Pivot. Okay. What do you think? What is the difference between the pivot and power pivot? From the word power, you might be assuming, right? There might be some difference between both of them. So in simple pivot, we can just drag data from one table, but in Power Pivot, we can connect tables, we can create measures and calculated fields in Power Pivot. Right, correct. Excellent. Yeah. See, under pivot table, if you see in simple pivot, you can connect only the one set of data, wherein in power pivot, as the name states, power, it gives you an power to connect multiple data sets or multiple tables and consolidate all those data into one single pivot. This is the one thing that is one of the most popular and the most known feature into data analytics. Okay, so as I have said you, it will store all the data into its memory. Okay, in memory, data modeling and analysis tools, enhance Excel capability for large data sets, creates data model with relationship. Means we can create a relationship against the multiple data sets. And also along with that, we will be using DAX, that is data analysis expressions, for calculation purpose. And once you are aware about Power Query plus Power Pivot, as the picture states, that you are a data hero. No one can catch hold you if you are aware with this excellent tool. I would just show you one demo.
See, this is the notepad. Okay, over here you can see there are alphanumeric data, and we need to split the data into the 3 columns. For completing this task, if you do it via Excel, then you need to copy it. You need copy it, bring it into Excel. You need to apply a lot of functions, Excel functions into it, and you have to get the desired result. However, over here, if you see, I have created a Power Query over here, and in Data tab, as soon as I browse the new notepad set, okay, change the source. This is the very basic thing that I am showing you. See, for example, this is the notepad. I'm extracting the data from notepad to Excel and split the data into reference 1, reference 2, and reference 3 into 3 sets of column, wherein the alphanumerical data is been splitted into column A, B, and C. I will close it and I will just click on refresh button. You can see over here, oh sorry, I have taken the wrong set. I have to take the second notepad. I'm just browsing the second notepad over here. Okay, close. Just click on refresh button. You can see over here, within few seconds, I am able to split this data. And if you want to make any sort of corrections into it, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे queries and connections लिखा हुआ है, यहाँ पे बस क्लिक कीजिए. यहाँ पे जिस तरीके से आपके VBA के कोड्स, मैक्रो कोड्स आप लिखते हो VBA एडिटर पेज में, उसी तरीके से ये जो M लैंग्वेज है ये आपको लिखना पड़ता है. ओके, एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे जैसे हमने जो जो स्टेप्स की है वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्डेड हुए हैं. ओके, एंड यहाँ पे और ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड द M लैंग्वेज. यू कैन सी ओवर हियर. आई विल जस्ट मैक्सिमाइज दिस स्क्रीन. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये कोड्स लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोर्स हमने लिया हुआ था. ठीक है, ये हमारा पाथ है, सोर्स पाथ है. फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कॉलम्स को स्प्लिट किया था. तो यहाँ पे हमने टेबल डॉट स्प्लिट कॉलम्स का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसके थ्रू हमने जो डेटा है उसको स्प्लिट किया था. तो हमने यहाँ पे 2 बार स्प्लिट का ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है. एंड फाइनली जैसे ही डेटा स्प्लिट हुआ, हमने उसको रीनेम कर दिया. सो रीनेमिंग हमने किस तरीके से किया, तो ये बाय डिफॉल्ट ही कॉलम के नाम से कॉलम 1.1, कॉलम 1.2.1, कॉलम 1.2.2. So we have renamed this column as reference number 1, reference number 2, and its reference number 3. Okay, so ये तो बहुत छोटा सा सेट ऑफ डेटा है. This is the real life example that I do in my day-to-day activity, and we need to split out this data. We need to upload it into our Oracle system, and then Oracle system will perform its task for inventory upgradation. So practical, जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्ड की, तो हम जो एग्जाम्पल्स कवर करते हैं वो एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ के बेसिस वाले एग्जाम्पल्स है. एंड ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया है, दिस इज, इवन दो दिस इज अ डमी डेटा, बट दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट आई डू इनटू माय डे टू डे एक्टिविटी. मतलब ये मेरा एक रिपीटेटिव टास्क है जहाँ पे मुझे इन्वेंट्री जो है मुझे ओरेकल सिस्टम में अपलोड करनी पड़ती है वाया एक्सेल फॉर्म. एक्सेल में डेटा सेट, नोटपैड में मुझे डेटा आता है, उसको एक्सेल में डेटा को डंप करना पड़ता है. फिर मुझे एक डेटा सेट बनाना पड़ता है इन द सेम मैनर, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3,
and then I need to upload this data into Oracle system. So आप यहाँ पे देख रहे हो just within a second of time मैंने एक नोटपैड का डेटा कन्वर्ट कर लिया, and I deal into thousands of data, not into tens or hundreds of data. I deal daily basis on into thousands of data, and within 1 minute of time I complete my task. And previously, when people were not aware about this feature of Power Query, they used to invest hours of time into it. First, they need to copy paste the data into Excel file. Then they used to apply n number of Excel functions. And after applying n number of Excel functions, they were not sure whether the data which they are uploading into the Oracle system is 100% accurate or not. And they used to invest hours of time into it just to complete the task. And nowadays, we are not bothered about the n number of data. We just perform a task by changing the path, save the file, and upload it. This is how you could automate your repetition of tasks in a much effective manner. I hope you have understood what I'm trying to explain you. Yes, friends? Yes, Do you have any queries into it? No, sir. No from. Okay. So over here, you can see, again, I will be taking you to the Power Query editor page. See, those of you have done the VBA course, okay, this would be the easiest or the simplest course, I may say. Just you need to understand the logic. Okay, uh, as in Excel ribbons, we have n number of features. Similarly, over here also we have n number of features. Okay, so in our course, I will be teaching you how we will be using these options, as well as we will be also teaching you how to write the codings over here in this way, how we can write these codings, as well as how we can use these functions also for performing a task. Do you have any queries over here? not yet. No. No, sir. Okay, so we will just move ahead. So this would be the course information. Over here you can see the batch code is HPPT001. The course duration is 4 months, and it would be the Sundays batch, and the batch timing would be 11:15 a.m. to afternoon 2:15 p.m. and the actual class would be starting from 15th of October, that is the next week, and the fees would be 12,000 rupees. And if you pay the entire fees at the time of admission, then you would be getting 10% of discount, that is 1200 rupees discount you would be getting if you pay the entire fees at the time of admission. And if you choose the installment facility, then you would be getting 2 installment facilities, wherein you need to pay 6,000 rupees fees before on or before 15th of October 2023, and the next installment you need to pay by 16th of November 2023. So any one of you have any query towards this course information? Okay, great. So these are the payment modes. So basically we have 4 payment modes, that is the UPI ID, Google Pay, Phone Pay. Then you can pay via debit, credit card through this gateway, that is instamozo.com. However, you need to make sure that if you are choosing this option, instamozo.com, for paying out the fees, then the gateway charges would get applied
and that are somewhere around 3 to 4% of the amount that you are paying out, and the gateway charges has to be paid by the student. Therefore, we would strongly recommend you to don't use instamozo.com as your preferred payment method, because 3 to 4% gateway charges would get applied, and student has to pay that fees, pay that amount along with the fees that you are paying out. And the next option is NEFT IMPS banks transfer. So you may note down this account details. If you are willing to pay the fees via IMPS or NEFT, then you need to have this account details. And I would strongly recommend you to pay the fees using Google Pay or Phone Pay, because this is the one of the most easiest payment way, and there are no gateway charges or extra charges been applied towards it. So this is, please note down Raza Sagar's number. If you don't have, then you may note down the Raza Sagar's number, and you may pay the fees on this mobile number. Okay. And regarding the reimbursement, if any one of you, आप में से कोई अगर आपकी जो फीस है वो आपके कंपनी से reimburse करना चाहता है, so let us know well in advance at the time of admission itself, because we will be charging you 18% GST on the course fees. Means 12,000 plus 18% GST will be applied. So you need to let us know well in advance, so that we would be providing you the proper tax invoice, 12,000 plus 18% GST. So any one of you are planning to reimburse your course fee from your company? Yes, friends. Any one of you are planning to reimburse the course fees from your company? I need No. to check. I need to check. Okay, you may just check it out and let us know at the time of admission itself. Okay, so that we will be providing you the tax invoice. So do you have any queries towards it? If you have any queries, any questions, you may please let me know. I will help you out in answering your questions. Yes, friends, do you have any questions? No, sir. Anybody else? Because I have done from my end. Okay, so it's totally the question answer session. So if you have any sort of questions, you may just ask me. I will help you out in answering your questions. उससे नो क्वेश्चंस एज सच बिकॉज ये सारी चीजें तो पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Right, because आप में से almost out of 6 of you, 5 of you are the ex students, so you are well aware about the institute. Okay. करेक्ट, वो इशू नहीं है, लेकिन डेमो से एक्सपेक्टेशन था कि कुछ एक्साइटिंग देखने मिलेगा ताकि लोग मोटिवेट हो इसको ज्वाइन करने के लिए. आई थिंक ये बड़ा Exactly, बोरिंग लग रहा है exactly. डेमो. Okay. I was actually expecting some more detailed things about the course, but only you have explained just a few things, which is not more enough. Because after getting some more information, I'll be able to make my decision and go ahead with the course registration and Yeah, something that like is the that. reason I am asking you, if you Nothing have is any. happening. Only you have explained only one example in the demo course. If you say, if you are telling, if you are plan to teach 100 things in the course, so at least 10 examples you should supposed to be include in the demo things. So actually, this is not expected. Okay, so that It's is the very reason I short am term. asking you now. If you have any sort of questions, see what happens if you would be asking I me some doesn't know sort of anything questions. about Power Query. I doesn't know anything about Pure Table. How can I ask you with the 5 minute things? Tell me. I'm completely blank about it. Okay, so
ask me the questions now, like how we will So be Hussein, using it. Hussein, Yeah. rather getting Something into come from the you actually. argumentative mode, what I would suggest is from the demo session, the students or the aspiring students would like to see the magic that could happen in Power Query. Okay, how would you connect Power Query to your Power Pivots and so on and so forth to from, because if you're using Power BI, this is the bread and butter. Power Query is the bread and butter of your Power BI, right? So how are you going to connect this with that? How are you going to do this? So all the magic that could happen using, because generally एक्सेल में ये चीजें बहुत सालों से है, पावर क्वेरी वाला, राइट? किसी ने कहीं ना कहीं जाके क्वेरी कुछ ना कुछ बनाया होगा, स्प्लिट किया ही होगा, मोस्टली ये चीजें यूज हुई होगी। लेकिन क्लास अगर ज्वाइन कर रहे फीस देके, तो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिले? ये जो See, कनेक्शन वाला हाँ, चीजें है, ये चीजें तो अभी 6 में से 5 लोग तो कर लिया होगा ये लोग। देखिए यही तो चीज है ना, इसीलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो लेट मी नो, एंड नाउ हाउ यू हैव आस्क्ड मी हाउ वी कैन कनेक्ट इट, right? So see, regarding the connection, as I have told you, this is the inbuilt feature of the Excel, wherein most of the people might be not knowing about it, right? So यहाँ पे जो डेटा टाइप है, कितने लोग आप में से कई लोगों ने यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके इसको एक्सप्लोर किया भी नहीं होगा। जैसे कि अभी मुझे नोटपैड कनेक्ट करना है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द नोटपैड डेटा, okay, that we have, and we need to split it, right? We need to split this data. So what we can do over here is, instead of copying pasting it, okay, what we will be doing is we will be opening an Excel file, okay, Excel workbook. We will be going to data, and over here you can see we have an option over here, right? This is the simplest method that I am teaching you, okay? तो यहाँ पे हमको डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है? हमको टेक्स्ट फाइल से एक्सट्रैक्ट करना है। सो ओवर हियर यू कैन सी देयर इज अ टेक्स्ट रिटन ओवर हियर, just click over it, okay, you would be getting an option for browsing the text file, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट फाइल को ब्राउज करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिंपली इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करते हो तो ये आपको एक प्रीव्यू देता है कि इस तरीके से आपका जो डेटा है पावर क्वेरी का जो एडिटर पेज है उसमें आपको इस तरीके से डेटा दिखाई देगा। वेरिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कॉलम को नाम वगैरह कुछ दिया नहीं है, पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया कि दिस इज द डेटा विच इज इनटू अ कॉलम फॉर्मेट, राइट? तो यहाँ पे ये कॉलम में आया हुआ है। नाउ वी नीड टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द डेटा। एज सुन एज यू ट्रांसफॉर्म द डेटा यू गो इनटू द पावर एडिटर पेज। अभी यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है एंड नंबर्स है, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास डेटा है, हमको इसको 3 कॉलम्स में स्प्लिट करना है। बिकॉज पहले वाला जो है दिस इज न्यूमेरिक डेटा, देन देयर इज एन अल्फाबेट डेटा, देन अगेन देयर इज अ न्यूमेरिक डेटा ओवर हियर। सो यहाँ पे हमारे पास जो इनबिल्ट फीचर्स है, ये जो टूल है रिबन्स में, यहाँ पे हमको इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन सी ओवर हियर स्प्लिट कॉलम्स, राइट? यू क्लिक ओवर हियर, यू कैन सी यू कैन स्प्लिट द कॉलम्स बाय एन नंबर ऑफ मेथड्स। पहला तो डिलिमीटर है, डिलिमीटर यानी कि क्या होता है? आपका सेपरेटर होता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई सेपरेटर है नहीं जिसके थ्रू आपको इसको स्प्लिट आउट करना है, तो ये ऑप्शन आप यूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज आपका बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी आपके फिक्स नहीं है जिसके थ्रू आप इसको स्प्लिट कर पाओगे। बाय नंबर ऑफ पोजीशंस, ठीक है? तो यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे भी आप इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे। सो फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस करना है या अपर केस टू लोअर केस करना है, देन फिर आता है डिजिट टू नॉन डिजिट एंड बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। इस तरीके से ये ऑप्शंस है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो डेटा सेट है वो यहाँ पे स्प्लिट आउट हो चुका है, ओके। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो 100% यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। हमको क्या करना है? यहाँ से भी जो नंबर्स है उसको भी स्प्लिट आउट करवाना है, ओके। एंड जैसे हमने ये स्टेप कंप्लीट किया, सो यू कैन सी ओवर हियर
into the applied steps, यहाँ पे जो steps हम perform कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे record होते जा रहे हैं. And any point of time you think कि नहीं यहाँ पे ये step ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, तो you can go over here and you can edit it. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉलम का नाम इसने कॉलम 1.2 ले लिया बाय डिफॉल्ट. ओके, यू कैन चेंज इट. गो ओवर हियर, you can just change it to reference number 2. Okay, you can see over here it has got changed. So this is how you could complete your task. लेकिन ये कैसा है, आप जिस तरीके से VBA मैक्रोस करते हो कि आप कोडिंग वन टाइम करते हो एंड हमेशा उसको यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ अ बटन, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जो चीजें हम आपको सिखाएंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि मैं आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमको इसको फिर से स्प्लिट आउट करना है बाय नॉन डिजिट टू डिजिट. तो जैसे हम इसको बाय नॉन डिजिट टू डिजिट करते हैं तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. ओके, and then we need to rename this. Just double click on it and rename it. It's very easy than the your VBA macro. ओके, तो यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस नंबर 1 नाम दे दिया. यहाँ पे हम जाएंगे हमारा कोडिंग में, यहाँ पे हम इसको नाम चेंज कर देंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लास्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है. तो पहले हमने क्या किया, हमने इसको स्प्लिट किया तो इतना ही टास्क कंप्लीट हुआ था. देन नेक्स्ट स्टेप में इफ यू रिमेंबर हम VBA मैक्रोज में F8 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हम F8 के जगह पे हम इस तरीके से स्टेप्स पे क्लिक करते हैं एंड आपका जो एडिटिंग पार्ट होता है बस आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बार यहाँ पे है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो. You cannot edit anywhere into this data set over here. So ये जो सारी चीजें हैं ये आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो क्लास में हम जब बेसिक से स्टार्टअप करेंगे तो धीरे धीरे करके आप ये सारी चीजें उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. Hope I am able to explain you how we can use this. Okay, and इसमें आपके पास जब आप इसको लोड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ ऑप्शंस है. ठीक है, क्लोज एंड लोड्स में तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप आपका पाइवोट रिपोर्ट भी बना सकते हो. ठीक है, पाइवोट चार्ट्स भी बना सकते हो या फिर आप सिर्फ आपका कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो. अगर आपको टेबल एज इट इज चाहिए, जैसे कि अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि टेबल जो हमको डायरेक्टली डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, हमको पाइवोट रिपोर्ट्स वगैरह डायरेक्टली बनाना नहीं है, तो हमने इसको बस ओके कर देंगे. सो यू कैन सी ओवर हियर कि टेबल हमारा डायरेक्टली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया है. एंड जैसे ही हमको नेक्स्ट टास्क मिलता है, नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ नोटपैड हमको मिलता है हमारे क्लाइंट के तरफ से, तो हम क्या करेंगे, हम बस डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे गेट डेटा में, यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पे आप चेंज सोर्स में जाकर आप बस आपका जो भी नया टेक्स्ट फाइल होगा उसको ब्राउज करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल बी ब्राउजिंग द थर्ड नोटपैड, सो वी विल बी जस्ट इंपोर्टिंग इट. Just click on OK, close, and just click on this refresh button. So basically what we have done, we have created a set of connection among the notepad and the Excel with the help of Power Query. तो इसमें क्या होता है कि इसी और यही पैटर्न है इसका. जिस तरीके से VBA में आपका एक सेट ऑफ पैटर्न है कोडिंग लिखने का, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका एक सेट ऑफ पैटर्न है इसको टास्क को कंप्लीट करने का. Yes friends, am I audible to you?
Yes, you are audible. Yes, Hussain. Okay, so I hope I have explained you in a much better way as per your expectations. एंड इसमें कैसा है फ्रेंड्स, देखिए जैसे जैसे आपके पास डेटा सेट आते जाएंगे, एग्जांपल्स आते जाएंगे, ओके, वैसे वैसे आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चलेगी. अगर इसका आप डायरेक्टली पाइवोट टेबल बनाना चाहोगे, आप डायरेक्टली पाइवोट टेबल भी बना सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई चूज कि मुझे ये डेटा सेट नहीं चाहिए, मुझे बस इसका कनेक्शन क्रिएट करना है. सो यहाँ पे जब ये क्वेरीज एंड कनेक्शंस का विंडो है, यहाँ पे बस इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है. यू हैव टू गो टू, एक मिनट, यहाँ पे और एक चीज आपको बताना है मुझे. यहाँ पे जब आप रिफ्रेश के ऊपर जाते हो, रिफ्रेश ऑल के ऊपर, यहाँ पे देखो कनेक्शंस एंड प्रॉपर्टीज है. ओके, अगर आपके पास एक मास्टर फाइल नोट पैड है, ओके, या फिर एक मास्टर वर्कशीट है, ओके, आप उसके ऊपर कंटिन्यूअसली चेंजेस करते रहते हो एंड यू पुल आउट ऑल दोस इंफॉर्मेशन इनटू अ मास्टर वर्कबुक एंड यू सेट ओवर हियर कि एवरी 60 मिनट्स पे आपको ये जो पावर क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए, ओके, या फिर अपडेट होना चाहिए. देन यू हैव अ फीचर ओवर हियर of refresh every 60 minutes or every 30 minutes. So and even there is an option of enable fast data load. So इसमें क्या होता है, ये options जब आप क्लिक करते हो refresh data when opening the file, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पावर क्वेरी है ये ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करता है. ओके, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सर एक क्वेश्चन था, यस, सॉरी टू इंटरप्ट. एक्चुअली सर ये जो आपने अभी प्रॉपर्टीज में जाके जो रिफ्रेश एवरी 57 मिनट्स का जो क्वेरी किया है, जी, अगर ये पॉसिबल है कि डेटा वेरी लेस, करेक्ट, हाँ, अगर डेटा ह्यूज, सपोज 50-60 लाख या 1 करोड़ के आसपास, तो हम उसमें कैसा करेंगे? अगर ये इतना टाइम लेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि फाइल मतलब ओपनिंग होगा. सपोज कि मेरे पास मेरा ऑफिस का डेटा 60 लाख है, तो मैंने उसमें एक पावर क्वेरी बनाई, ठीक है, तो उस पावर क्वेरी पे मैंने पावर पिवट लगाया, जी, तो अगर मैं ये ऑप्शन यूज करता हूँ रिफ्रेश एवरी 57 मिनट्स और या फिर अनेबल फास्ट डेटा लोड, जी, तो ऑलरेडी वो रिफ्रेश करने में वो 1 hour to 2 hour ले रहा है अभी, करेक्ट. जी, तो अगर मैं ये क्वेरी रन करूँ जी, तो वो ऑब्वियसली वो का लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद उसमें टाइम टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, करेक्ट. देखिए आपका, देखो एक चीज समझो, टाइम कब लेगा वो, जब आपका डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करता है. ओके. ओके, अगर आपका डेटा सेट ज्यादा है तो वो टाइम लेगा. ऐसा नहीं कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं वो विद इन सेकेंड्स में हो या विद इन मिनट्स में हो, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका डेटा सेट ही उतना बड़ा है. ओके. ओके, यू हैव तो टू होल्ड सम सॉर्ट ऑफ पेशेंस ओवर देयर. ओके, तो देयर इज नो ऑप्शन, करेक्ट. ऑप्शन ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें जो फीचर्स है जैसे कि एनेबल फास्ट डेटा लोड वगैरह, थोड़ा बहुत तो भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. एज यू आर डूइंग वीबीए कोडिंग ऑल्सो, वीबीए भी जब काम करता है, टास्क परफॉर्म करते हैं हम वीबीए के ऊपर, ओके, आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, राइट और रॉन्ग. तो करेक्ट, सेम करेक्ट, चीज करेक्ट. देखो, आप कोडिंग कर रहे हो, अगर आप बड़े से बड़े डेवलपर के पास भी जाओगे तो वो भी आपको बोलेगा कि यू हैव टू कीप सम सॉर्ट ऑफ पेशेंस, बिकॉज आपने एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो एंड वो ऑटोमेटिक हो रहा है. ओके, ओके, ओके. लेकिन लेकिन इतना डिफरेंस है उसमें कि मैनुअल करने में अगर आपको 1.5 hours लग रहे हैं, तो इसमें आपका 5-10 मिनट्स में काम होगा. ओके, ओके, फाइन, बट फाइन, थैंक यू, थैंक यस, यू. बट यू हैव टू कीप सम सॉर्ट ऑफ पेशेंस. या, या, श्योर, श्योर. ओके, Hey Hussein, building upon Ravi's question here, या, एक अगर इतना ह्यूज डेटा सेट है, 60 लाख रोज है लेट्स से, ओके, इसका एक और तरीका, यू कैन यूज एसक्यूएल क्वेरीज जिससे तुम डेटा पुल कर लो, राइट. या अब वो एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू भी आप डेटा पुल कर सकते हो ना. यहाँ पे correct, वही तो मैं आपको बता रहा नहीं हूँ ना कि यहाँ पे नहीं, मल्टीपल चीजें हैं जिसके थ्रू आप डेटा पुल कर सकते हो. या वो पता है सर, लेकिन अभी अब कंपेयर अगर करो बिटवीन योर एसक्यूएल क्वेरी एंड योर पावर क्वेरी, हम्म, ठीक है,
तो अब इसमें ऑब्वियसली एसक्यूएल फास्ट फास्ट काम करता है, वो तो एक साथ पूरा 1 लाख रोज फटाक से लाके दे देगा। तो ये भी वैसे ही काम करेगा ना। तो ये रो बाय रो एक एक पॉपुलेट करेगा या एक साथ पूरा बंच 1 लाख रोज का पॉपुलेट करेगा, कैसा पूरा होता पूरा है? एक साथ पॉपुलेट करेगा ये। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, जब मैंने इसको रन किया था, इसको जब मैंने रिफ्रेश किया था, ओके, सो ये रो बाय रो काम नहीं किया, इसने पूरा बंच ऑफ सेट एक साथ का परफॉर्म किया है। तो दोनों को कंपेयर अगर किया तो कौन सा फास्ट चलेगा, एसक्यूएल क्वेरी देखो, या दोनों PowerQuery? दोनों अपने अपने जगह पे उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। इफ यू टेल मी टू कंपेयर 100 cc बाइक विथ 150 cc बाइक, देर इज नो कंपैरिजन, राइट। हर एक का उसका भी अपना कुछ एडवांटेजेस है 150 cc बाइक का, उसके भी अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है, 100 cc बाइक के भी अपने कुछ एडवांटेजेस है, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है। लेकिन पावर क्वेरी की अगर मैं बात करूं, तो पावर क्वेरी जो है, दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन इनटू योर एक्सेल, ठीक है। एंड वेयर इन एसक्यूएल की जब मैं बात करूं, तो आपको एसक्यूएल पे जब आप काम करोगे, तो आपको आपके आईटी की तरफ से आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेगी उसका पूरा वो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी का परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इनबिल्ट फीचर है। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह कुछ पे आउट करना नहीं है आपको। आपका आईटी वाले भी आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। जिस तरीके से आपका वीबीए मैक्रोज है, ठीक है, एक्सेल मैक्रोज, उसके लिए आपको, आपने जब इसका कोडिंग करना स्टार्टअप किया था आपके ऑफिस में, आपने किसी का परमिशन नहीं लिया था, राइट। आपने डायरेक्टली इसका कोडिंग स्टार्ट कर लिया था एंड यू स्टार्टेड यूजिंग इट। वेर इन एसक्यूएल अगर आप यूज करते हो, यू हैव, अगर आपके कंपनी में काफी सारा डेटा को लेके रिस्ट्रिक्शंस है, तो आपको आईटी का परमिशन लेना पड़ता है। एक चीज समझो, दोनों का डिफरेंस वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक चीजों का अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। उससे या Yeah. So one more thing, guys, I would like to explain that Power Query is the most powerful thing, or you can say a feature in Excel. Like I can give you example. Like every month, I consolidate almost 400 workbooks and 10 lakhs rows within just 5 minutes. In macro, it is not possible in 5 minutes. वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें जो चीजें हैं, ओके, अभी देखो, पहले वीबीए मैक्रो आया, उसके बाद पावर क्वेरी आई, ठीक है। वीबीए मैक्रो के जो डिसएडवांटेजेस थे, उसके जो लूफहोल्स थे, माइक्रोसॉफ्ट ने जब पावर क्वेरी डेवलप कर रहा था, वो उसने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि वहां पे वो जो मेरा प्रोडक्ट है, उसके जो लूफहोल्स है, उसके जो डिसएडवांटेजेस है, दैट हैज टू बी कवर्ड अप ओवर हियर। एंड अगर आप देखोगे कि 2010 के पावर क्वेरी में, 2016 के पावर क्वेरी में एंड आज के पावर क्वेरी में जमीन आसमान का फर्क है। As the time passed on, the things got more improved, more enhanced, and in a much better way. And आने वाले टाइम में आपको जो मैं ये चीज बता रहा हूँ ना, कि यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें आपको खुद कोडिंग करना पड़े, ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपको यहाँ पे खुद से कोडिंग करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो ये फीचर्स दिए हुए टूल्स वगैरह, ओके, ये इतने एडवांस लेवल पे है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको मतलब ऐसे कोडिंग्स करने की जरूरत, मतलब मैन्युअली ये पूरे कोडिंग्स लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट इसको इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करने वाला है। एंड ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली डेटा को सेंस करता है। तो आपने जब देखा, जब मैंने इसको ब्राउज किया, ठीक है, नोटपैड को जब मैंने ब्राउज किया, तो उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया कि ये डेटा जो है ये कॉलम में है। इट इज सो स्मार्ट, ये टूल ही उतना स्मार्ट है कि उसने ऑटोमेटिकली डेटा को देखो सेंस कर लिया कि ये कॉलम में है डेटा। यू कैन सी ओवर हियर द प्रीव्यू एंड यू कैन सी द नोटपैड एज वेल।
नोटपैड का तो डेटा आप सबको पता है, इट्स अ प्लेन टेक्स्ट, सी इट्स अ टोटली प्लेन टेक्स्ट। एंड जब हमने इसको ब्राउज किया तो ये ऑटोमेटिकली उसने सेंस कर लिया यहाँ पे कि ये डेटा जो है ये कॉलम में एंड रो फॉर्म में है, एंड बेस्ड ऑन अपॉन दैट हमने हमारा टास्क कंप्लीट कर लिया। अंडरस्टूड? यस फ्रेंड्स? Yes. Understood, sir. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, यहाँ पे और एक ऑप्शन है दैट इज लोड टू। ओके, अभी आपने इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया एंड सडनली यू रियलाइज कि ये मेरा डेटा सेट बहुत ज्यादा है। ओके, इंस्टेड ऑफ पुलिंग द डेटा इनटू एक्सेल, आई जस्ट नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन ओवर हियर। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन क्रिएट अ कनेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है द क्वेरी is in currently connected to a table in your workbook. Loading the query as a connection will delete the table. Do you want to continue? Okay, तो ये देखो यहाँ पे क्या किया हमने, बस एक कनेक्शन क्रिएट करके छोड़ दिया, वेर इन हमारा यहाँ पे डेटा कहीं पे भी नहीं है। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरा डेटा एक्सेल में दिखना चाहिए, ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट राइट क्लिक इनटू क्वेरीज एंड कनेक्शन विंडो, लोड टू पे क्लिक कीजिए, टेबल पे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे वो आपको पूछता है जिस तरीके से आपको पाइवोट टेबल में पूछता है कि आपको पाइवोट कहाँ पे चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए या न्यू वर्कशीट में चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है। अगर आपको न्यू वर्कशीट करना है तो आप न्यू वर्कशीट यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉड्यूल। इसके ऊपर जब आप टिक करते हो तो उसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे आपको कनेक्शंस पता चलते हैं। आप मल्टीपल कनेक्शंस जो है यहाँ पे आपको पता चलेंगे, यहाँ पे आपके मल्टीपल कनेक्शंस कनेक्ट होते हैं, एंड उसके थ्रू फिर आप पावर पाइवोट इजिली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, लोड टू में क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टेबल चूज करोगे, तो यहाँ पे ये बता रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में A1 सेल्स के पास आपको डेटा चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे डेटा हमने फेच कर लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो पावर क्वेरी है दिस इज वेरी गुड टूल। जब आप इसको रियल लाइफ में यूज करोगे ना, तब आपको इसकी प्रैक्टिकली इसके पावर को समझोगे ये कितना पावरफुल टूल है। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? No, sir. No, sir. देखो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं तो मुझे खुद को समझेगा नहीं आपको कितना बताना है, क्या करना है। सेशंस कैसे होते हैं, दोनों साइड से गिव एंड टेक रिलेशनशिप की तरह होना चाहिए। दोनों साइड से अगर कम्युनिकेशन होता रहेगा, सो इट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ट्रेनर को पता चलेगा कि ट्रेनीज के एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए वैसे वैसे यू कैन सी आई हैव टेकन यू थ्रू दी पावर क्वेरी एडिटर पेज। पूरा डेप्थ में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसको ब्राउज करते हैं, किस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं इसमें जो हम प्रैक्टिकली हमारे क्लास जब स्टार्टअप होगा उस टाइम पे हम उसको देखेंगे, सीखेंगे एंड सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। So if you have any sort of queries, questions, so please let me know so that I will help you out in explaining you uh, your questions or answering your questions.
Sir, tell me about DAX functions, sir, and expressions, and that all formalities we have to do in that. You want to understand about the DAX function, right? Yes, sir. Okay. Okay, see, I will show you. Guys, I would request you to please mute. Okay, see, this is the pivot table that we have created over here. If you see over here, there is an option ಏನು called ಕರೆದ್ನ? add major. If you click on this add major over here, there are friends, I would request you to please mute. There is a lots of disturbance. ಲೇ ನಿನ್ನ ಕುತಿ ಗಂಟ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮೆದಕ್ ಮಾತಾಡು. Okay, so over here you can see there is a DAC. There are these are the DAC function over here. Okay, so if you choose an option over here, like for example, just let me check over here, concatenate. I will just try out the concatenate function over here. Okay, see, concatenate X. Okay, I'm using this function over here. So it's asking me the table name. Okay, so our table name is this one, underscore 181 JBO. Okay, so what we will do, we'll get the table name over here by clicking on, just a second, and just write a table name over here. See, here is the table. We'll just tab on it. So it's asking us the expression. What is the expression you want? Expression in the sense, what thing you need to connect towards it. Okay, so now you have an access to the table over here, and in this table I want to connect reference number 1 column. Okay, and over here we'll apply comma. It's asking us the delimiter, so I want an delimiter as an hyphen over here. And now order by expressions is asking us, so we will be using second column over here. We'll close the bracket, we'll check a formula over here. See, it's showing check formula has no error. So this is how you write the DAX function over here. You can check it immediately how the whether the DAX function you have written is correct or not. So over here you write you check it, the DAX function. Okay, and then you click over here. Just a minute, we need to write the major's name over here. So I will write over here as join. Okay, and we'll click on OK. And over here, if you see, there is a function created over here. So you can see over here how we have connected our numbers. See, and using concatenate into normal pivot table, it's not possible. It can be done into the power pivot. This is how you can do it. So any other question you have? Yes, friends. No, not from my side. Not from my Not good. So I hope I have explained you DAX function in a much better way.
Yes, Hussain. Okay, friends. So before winding up the call, I would request you to please note down the payment method. And if you have any sort of queries, so you may contact me on my mobile number. I'm writing my mobile number over here. I'm just zooming it out. So this is my mobile number 9881471407. So if you have any sort of query, you may contact me on my mobile number, or else you may contact our co-founder, Mr. Raza Sagar. Okay, friends. Okay. Okay, friends. So last time again, I am asking you if you have any sort of queries, then just let me know so that I will be able to answer your queries. Yes, friends. No questions. Okay, fine. So we will end the class over here and hope to see you next week. Bye, friends. Bye, sir. Thank you. Okay, bye.